Hi everyone. So as I promised, time हो गया है 3:06 and I think let's begin, right? I hope we are all set. All set. We can start. Yes. Yeah. So I guess I'm audible to everyone, right? Hi Shivangi. How are you doing? I'll just introduce everyone to Shivangi. Shivangi is heading the sales at Courtyard. Hi, my name is Rishi Narang, and I'm handling marketing. I hope I've met most of you guys, and to all the new joinees today, hi. Hi, Shivangi, how's it going? Great, great. I think really looking forward, and I am still getting messages, from everyone. I think everybody's pretty excited to know what's coming up. So I think we shouldn't waste any further time and just get going there. Yeah, absolutely, absolutely. I mean, this is probably our third virtual meet, third or fourth, I'm not sure. But I hope this is the last virtual meet we are doing. I mean, I want to meet everyone in person. I just remember last year, Jan में हमने जब ये Roseanne launch किया था, and we had done it at site, and the number of people who had shown up, and it was a spectacular show. I hope let's hope that everyone is doing well. Vaccine is out quickly. Everyone is all set. I'm already seeing a lot of movement. I mean, आप लोग सब आ रहे हो साइट पे and काफी सारे काफी सारे site visits हो रहे हैं. So I'm hoping कि अभी now things are going to go back to normal. Let's just erase 2020 out of the memory. Let's just remember all the good things जो हमने किए 2020 में. काफी लोगों ने काफी सारे चीजें सीखी घर पे बैठ के जूम पे सीखी क्लासेस किए एक्सरसाइज किया हमने भी इनफैक्ट काफी सारी चीजें ऑर्गेनाइज की हमने सीपी मीट ऑनलाइन करना सीख लिया सो इट्स बीन अमेजिंग आई थिंक द जर्नी इज बीन अमेजिंग 2020 ने काफी कुछ सिखाया हमको so let's take all the best bits out of 2020 and use it in 2021 इनफैक्ट ये साल के बिगिनिंग से एंथुजियाज्म रियल एस्टेट में तो बहुत ही अच्छा रहा है सिंस आई वुड से प्रोबेबली October onwards, if I'm not wrong, Shivangi, September onwards, in fact, the enthusiasm has been amazing in real estate. And y'all know all the good news. I don't need to tell y'all stamp duty benefits and so many things which are happening. And आप लोगों ने इतने सारे deals किए हैं, which is amazing. I think 2020 आप लोगों के लिए it's been a bumper year. Probably शायद best in like probably the last 5 years, I would say. So with every issue, every negativity, every hurdle comes with an opportunity, and आप लोगों ने इनफैक्ट वो opportunity बराबर से grab करके performance दिया है. So it's been superb. So I'm not going to waste any more time. Okay, now let's get into the action. Okay, I'm already seeing बहुत सारे लोग आ चुके हैं. So I will not hold on to you guys. Let's start. So as you can see on your screen, we are simply here for Roseanne. And this is probably the last time I'm going to be talking to you about Roseanne. Uh, I'll come to why this is probably the last time. Okay. So जो यहाँ पे नए आए हैं हमारे पास फर्स्ट टाइम मैं आपको बता दूं कि रोजैन है क्या इट्स एन एक्सक्लूसिव 3 BHK टावर हमारे कोर्टयार्ड के डेवलपमेंट में कोर्टयार्ड इज बेसिकली अ 9 एकड़ लैंड पार्सल जिसमें हमने 7 एकर्स में अपने टावर्स बनाए हैं 2 एकर्स में हमने कम्युनिटी पार्क बनाया है उसमें से ऑलरेडी 4 टावर्स रेडी हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं रेजिडेंट्स ऑलरेडी मूव इन हो चुके हैं रोजैन इज आवर फिफ्थ टावर so Roseanne is our biggest 3 BHK tower. It is the most exclusive 3 BHK tower and it is one tower in Courtyard which is unlike any other. इनफैक्ट रोजैन का कोई मैच ही नहीं है पूरे थाने में देर इज नथिंग लाइक रोजैन हमारे थाने के पूरे इलाके में इनफैक्ट आप सब तो जानते हैं आई होप आप सब आके ऑलरेडी रोजान देख चुके हैं और अगर नहीं आए हो तो प्लीज मतलब कल का कल ही आ जाओ आई मीन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर so this is basically a tower this is an apartment which has been designed inside out and I'm going to take you inside out in this entire project and through everything that we're offering yahan pe but before I get into this entire conversation I noticed that our director, Mr. Soham Narang, has also joined us. So, Soham, can we just have a quick few words from you? I know you're very busy, but just a few words, please. Yes, absolutely. Good afternoon, everyone. I think this is probably the last time we're going to meet virtually.
We've met 4 times this year like this, and I hope the year has ended well for all of y'all. I think every time we've met, we've had a good conversation. We've had a good conversation. I think he's having network issues. Shivangi, can you hear Soham? No, Rishi, I guess maybe I'll just drop in the message. We can Yeah, continue. yes. I guess he'll just join us in a bit, in a second. Let's just wait for him. So, yeah. So as I guess we were talking that this is the last time we want to see y'all in a virtual meet. We want to meet y'all in person. We want to have this conversation in person. आपको मिलना चाहते हैं हम लोग and hopefully next time when we meet, uh, let's see in how many months now, but this is the last time we should meet virtually. देखिए उस टाइम पे क्या टॉपिक बनता है. रोज़ैन का रिस्पॉन्स तो हैज़ बीन फिनोमिनल. रियल एस्टेट में हमने काफ़ी धमाका किया है. आई विल जस्ट मूव ऑन अ लिटिल फर्दर. मैं आपको इनफैक्ट बताना चाहता हूँ कि यार रोज़ैन ले कौन रहा है. इतना मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट अपार्टमेंट है, बेस्ट ये है, बेस्ट वो है, पर खरीद कौन रहा है. Just to give you some ideas without dropping names, obviously you guys who y'all have sold to, y'all obviously know the names, but बाकी लोगों को सब आइडिया देने के लिए without dropping names, I'm just going to give you all an idea कि क्या टाइप की जेंट्री है हमारे पास रोजान में. So here, so without dropping names, आप देखेंगे कि यहाँ पे we've got people from the best multinationals around. Tata has a good presence in Thane, so वहाँ से TCS से we've got an associate vice president. Raymond, we've got a couple of senior guys. Reliance, we've got a lot of good people from Reliance. Doctors, Jupiter Hospital, Bethany Hospital are the best hospitals in the city. Leave aside Thane, तो वहाँ के काफी सारे डॉक्टर्स हमारे रेजिडेंट्स है यहाँ पे बिकॉज काफी पास पड़ता है. वीव गॉट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द इंडस्ट्री. अगर आप देखेंगे फाइनेंस में से भी वीव गॉट अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड पीपल. आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड दैट यू आर सेइंग, मॉर्गन स्टैनली है. And as you'll even see that we've got someone from IIT also. So it has a great universal appeal. Not just this, okay, not people who are just working for companies, but बहुत सारे business owners भी है हमारे पास. A lot of these owners who got their factories, Kalyan, Bhivandi, at the outskirts of the city. We've got a lot of those buyers, a load of them. So this is just to give you an idea कि आपको इनमें से ऐसे कोई पता हो कि ये कोई ऐसे ये लेवल की कंपनीज में कोई हो, तो प्लीज उनको आप लेके आ सकते हैं. इनफैक्ट आई वुड इवन ऐड कैडबरीज आउट हियर एंड लॉट ऑफ अदर कंपनीज व्हिच आई हैव लेफ्ट आउट. Soham, hi. Are you here? Are you here with us? Yes, Rishi, but I suggest you continue the presentation. I can probably speak at the end of it because my network is a little dodgy. Okay, all right. Okay. Yeah, sure. Thanks, Soham. Yes. So carrying forward, अभी everyone is excited. हम हर टाइम जब भी मिलते हैं हम आपको बताते हैं यार पास्ट का रिपोर्ट कार्ड कैसा था. मतलब एवरी सेमेस्टर खत्म होता है तो रिपोर्ट तो पता होना चाहिए ना कि परफॉर्मेंस कैसा रहा. सो वील कम टू अपने पास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देख लेते हैं एंड इट्स बीन फिनोमिनल ऑब्वियसली. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई एम कंपेयरिंग नॉट जस्ट वन सेमेस्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर दैट इज 2019 वर्सेस 2020 एंड these numbers are I mean the graph does not do justice on this slide. The graph should be as tall as courtyard probably. So you will realize that versus the number of units we sold in 2019, which was probably double of 2018, यहाँ पे we sold 94% more number of units and the revenue also has gone up, meaning that we've sold apartments at a higher price substantially versus the past inventory. So 2020 has done amazing. People talk about all possible things, prices crashing, but please, I think this slide alone just does justice to that entire conversation. आप सब जानते हैं how performance has been everywhere. So this is what we've done. I think we've been more lethal, more potent than COVID also. So coming back to आपके लिए
you have done so much hard work, so we are most happy, and it is in fact our responsibility to reward and award you absolutely perfectly. So there is basically, we've done payouts for all brokerages all throughout. In fact, we've done it even during the lockdown when companies were shut, when people were not even approachable. We were out there calling up channel partners and saying, "Arey, आपका brokerage pending है, आप लेके जाइए please." And we've done it all throughout. We've done it all throughout 2020, 2021, and I'm proud to say that, like, we are the best in Thane. In fact, there was a survey which was conducted very recently, and it's a third party unbiased survey which I happened to chance upon, where they have spoken to the top 200 channel partners in Thane, and wahan pe they've asked them that the ease of doing business, meaning from taking the client to the site all the way till closing the deal, and also eventually receiving the check, वो बेस्ट कौन सा डेवलपर या कौन से डेवलपर्स करते हैं, एंड वी आर राइट देयर ऑन द टॉप, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू गाइस. इट्स जो हमारे साथ, हमारा जो रिश्ता है आपके साथ, you do your bit, we do our bit, and then we are winning this game completely. We're taking it absolutely by the horns. So it's all thanks to you guys, and we're doing a fantastic job. In fact, a few channel partners wanted to even talk to you guys and to encourage you all. Now, ये सिर्फ एक थोड़े रशेस जैसे आप समझिए, ये एक सिर्फ ट्रेलर है, ओके? ये सिर्फ एक ट्रेलर है. इनफैक्ट a lot of more channel partners would have given their blessings and given their messages for you all, बट मैं सिर्फ ये थोड़े कुछ चंद लोगों की बातें सुनाना चाहता हूँ. अगर इनकेस अगर आपका नेटवर्क थोड़ा खराब हुआ, थोड़ा बफर हुआ ये वीडियो ना, तो डोंट वरी, मैं आपको यूट्यूब लिंक भी इसका भेज दूंगा. सो डोंट टेक टेंशन, एंड अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो प्लीज वॉच दिस. अभी मुझे बताना आपके पास, आप इफ यू कैन हियर इट क्लियरली. ऑलराइट. It is one of the finest projects in the heart of the Thane city. Client can see what actually is buying, what is purchasing, what is getting. Personally, it's the rooms, the room sizes, the space that it is provided, and the quality. The quality that Narang puts into the construction is attracted to me. The kind of the clubhouse which they have provided, it's a 24,000 square feet lavish clubhouse at the heart of this city. The kind of the color, the choice of the ambience which they have done is really good. यहाँ पे कैसा है कि घर के साथ साथ ओपन एरिया जास्ती है, प्लस ओपन एरिया है, क्लब हाउस अच्छा है, और कनेक्टिविटी अच्छी है. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है. It becomes much easier for we as channel partners to sell a project when we ourselves are clear what the project speaks about. And in terms of sales people also, what I've seen is they have never cut corners in terms of explaining the project to the clients. The kind of the time they spend with individual clients which I've got on the site is really something which amazes me. Sales team is really helpful. They have been very transparent. I think I started working for Vadhva Courtyard for now past 3 years, and all the sales staff are really helpful. Sales team, be it the sourcing or the sales manager, are very cooperative. So once the client walks in here, he's registered with us, then it's completely headache. You can say headache, or you can see the follow-up will be completely by the sales manager or the sourcing manager here. We just have to get the client, introduce them to the sales managers, the rest they take it up from there. So our role automatically, I would say it ends there, and then it's the sales team who handles it so smoothly, right from the project positioning to showing the entire amenities, the flats, and right up to the financials. So it's almost like an easy job done. Our target should be to just get them to the site. The reason we work with such reputed developers, especially Vadhva, Narang Realty, is that they are the one who walk their talk. Once you do the work over here and the promised deadline is there for your payment, I haven't seen a situation where I have to run pillar to post to get my payment. I have never follow up for payments. It is always that they have called me directly for the payouts. पेंडेमिक में पेमेंट्स हमको, मतलब डेवलपर ने खुद आके हमको पेमेंट्स के लिए हमको खुद बोला कि आप यहाँ से पेमेंट ले लो, आपका पेमेंट रेडी हो गया, तो हमको खुद को फॉलो नहीं करना पड़ता है. फिलहाल तो डील के लिए सोचना चाहिए कितनी मेरी डील्स होगी,
कितना काउंटिंग होगा, एवरी मंथ में कितना होगा, फिर आप पैसा बना सकते हैं। बाकी पेमेंट के लिए सोचना नहीं चाहिए, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में भी पेमेंट आता है। When I get client here, they actually appreciate me for the location what I have bought them, the developer where I have bring them. The general feedback which I have seen along with the clients is that they are going out of the premises with a wow feeling. Now there is not even a single factor which Courtyard is actually not taken care about while taking consideration about the customer's need. Superb. I love the enthusiasm जिससे सबने बात किया है, मतलब क्या passion है, like the way they've spoken, it's you all are the owners of Courtyard, you own Courtyard, you know, जो passion से बात किया है, it's amazing and I mean we are very humbled कि इतना सब खुश है Courtyard के project से, not just the project itself but the ease of doing business. The sales team की तरफ से मैं सबको thank you बोलूंगा कि you know इतना वो जो effort डालते हैं and आप इतना appreciate करते हैं, मतलब thank you from the entire Courtyard family, you know, all of us out here, we absolutely with all our heart thank you कि इतने आपने मतलब ऐसी बातें की हमारे लिए. So by the way, this was just a few rushes. So part 2, part 3 इसका आने वाला है and we'll be sharing those also with you all. We'll share the YouTube links of this also with you all in fact. So moving forward हमने इनफैक्ट ये वीकेंड पे एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज की थी. ये काफी अच्छा लंबा वीकेंड था, राइट? सैटरडे, संडे और ट्यूसडे. So for the very first time in a complex in Thane of this scale, we had the Courtyard Premier League Season 1. And मैं आपको क्या बताऊं, मतलब the way people have played, मतलब they would put the IPL matches to shame. यहाँ पे 5 स्पोर्ट्स खेले गए थे. इंडोर में 3 गेम्स थी, बेसिकली चेस, कैरम एंड टेबल टेनिस. एंड आउटडोर में था फुटबॉल और क्रिकेट. एंड वी प्लेड ओवर 111 मैचेस इन 4 days. एंड द वे पीपल हैव पार्टिसिपेटेड, यू नो, ऑल एज ग्रुप्स. ये सिर्फ मैं आपको झलकियां दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2-4 फोटोज दिखा रहा हूँ. इन सब के भी वीडियोस बनेंगे. ये कल खत्म हुआ है रात को 9 बजे. वी वर एट साइट एट 9 o'clock. वी वर वॉचिंग दीज मैचेस एंड व्हाट अ गेम. Each tower played against each other, and the sole objective of this entire tournament was what? Just to bring all residents together. You know, आजकल सब इतने busy होते हैं, आप अपने neighbor को नहीं जानते हो, बाजू की बिल्डिंग तो दूर की बात है. तो हम लोग ने कोर्टयार्ड के चारों टावर्स को साथ में बुला के, उनकी टीम्स बना के, उनको एकदम कंपेटिटिव मोड में डाल दिया. उनके जर्सीज आप देख सकते हो. दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द टावर दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग. एंड आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फ्लोरेंस टावर वाज द विक्टोरियस आफ्टरवर्ड्स एट द एंड. पर एक बहुत ही फनी बात बताता हूँ, भले फ्लोरेंस जीत गया हो बट बाकी तीनों टावर टाई हो गए. दे ऑल फिनिश्ड एट एग्जैक्टली द सेम पॉइंट्स. मतलब क्या लेवल का कंपटीशन था. इट वाज अमेजिंग. सो this is what we do at Courtyard. You know, we want to bring everyone together. Courtyard is a huge family. Courtyard होता क्या है? Courtyard एक आंगन होता है, right? So आपके घर के आंगन में जब सब मिल के खेलेंगे, enjoy करेंगे, तो ही तो मजा आएगा. So that's exactly what we're trying to do at Courtyard, and we've built an amazing family out here. Brilliant. So moving forward now, let's talk about business. Okay, I've taken you all through everything else possible about Courtyard. Let's talk business right now. Okay. So the last time when we met, मैंने आपको ये बताया था कि Florence and Onyx are sold out. Phenomenal response. Already sold out. ये बात मैंने आपको की थी 15th of October when we met last. I want to just give you all an update कि उसके बाद as of today, आईवी में 5 यूनिट और नेला में 3 यूनिट. इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सॉरी, आईवी में 4 यूनिट हो गए हैं. we've also just concluded a deal late in the evening yesterday. So sorry, I forgot to make this change. It's 4 and 3 units. So आप समझ रहे हैं कि it's just a handful units. Hopefully before the next weekend they will all be gone. So in case आपके अगर कोई customers है जिनको अभी भी interest है, सोच रहे कभी पेमेंट करें, मुहूर्त देख रहे, प्लीज मुहूर्त मत देखो, जल्दी आओ. अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे. ओके, these units are going and they'll be gone in no time. So quickly just grab these last units fast. Roseanne हमने लॉन्च किया था you know just before the lockdown. Then lockdown happened. We resumed sales eventually, and in the last 6 months we've done a damn good job. In fact मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, forget 6 months,
Just forget 6 months. Last 2 months, in the last 2 months, we've sold about 32 units in Roseanne. It's a 3 BHK tower. It's 3 crore ticket size. It's like selling 3 फ्लैट्स इन थाने. ये सेम प्राइस कंबाइन करके तो 3 फ्लैट मिल जाते हैं थाने में. 3 crore का फ्लैट वी सोल्ड 32 in the last 2 months. And the most important thing that I want to tell you is 32 में से 23 units are all sold by channel partners. आप समझ सकते हो. अब मेरा मैथ काफी ओके है. अगर मैं कैलकुलेटर अगर निकाल के मैथ भी कर लूं, मेरे हिसाब से 23 out of 32 works out to about 72%, right? I think I'm right. 71 point something, 72%. अभी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो जिसमें ब्रोकर 72% बेचते हैं? So this is the product which is absolutely tailor-made for you. अगर आप अभी इसमें बिजनेस नहीं करोगे, I mean, sorry, you're missing the boat. 2 BHK अपार्टमेंट, 1 crore अपार्टमेंट, 1.5 crore अपार्टमेंट तो यार कस्टमर्स खुद भी ले लेते हैं. ये ऐसा जो प्रोडक्ट है ना, ये सिर्फ आप ही बेच सकते हो. बिकॉज यू ओनली अंडरस्टैंड कि ये क्या प्रोडक्ट है, क्या लाइफस्टाइल ऑफर करा है, क्या बेनिफिट्स है, और ये आप ही कर सकते हो कि आप कस्टमर को लाके उनको समझा के आप डील क्लोज कर सकते हो. सो दिस इज योर बेस्ट शॉट एट सेलिंग द बेस्ट यूनिट्स इन कोर्टयार्ड. दिस इज योर चांस. यू शुडंट लूज दिस, ओके? बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे, मैं आपको प्राउडली बड़े स्क्रीन पे वापस दिखाऊंगा रोज़ान सोल्ड आउट. ओके, सो यू ग्रैब दिस चांस क्विकली. Coming to all the new guys out here, फटाफट दिखा दूंगा. I don't want to waste any time. Just to give you a glimpse of what all things we have out here. We've got a 24,000 square feet clubhouse out here with all the possible amenities. We've got a banquet, games room, gymnasium, spa. We've got a multi-purpose court on top. Come to the site, see it. Okay, I'm not going to talk about it. 4 swimming pools out here. We've got a creche for the babies inside. We've got a 40-seater theater inside. We've got 2 squash courts inside. 24,000, right? It's huge. It's one of the biggest clubhouses in Thane. That's a massive gymnasium. I think ये neighborhood में ना, जहाँ पे आप जिम में पे करके membership लेते हो ना, ये उससे भी बड़ा है. So that sort of a gymnasium we have out here. Outside we have the football turf. This is where all the action happened last night, and you can ask the residents how it went, all right? And yes, obviously we are at Pokhran Road too. Yes, we are exactly close to Yeor Hills, तो आपको views दिखते हैं यहाँ पे. I don't need to talk to you about the views. But रोज़ान एक ऐसा टावर है जो not only येवर हिल व्यू देता है, पर आपको बैक साइड पे कम्युनिटी पार्क व्यू भी देता है. सो आई थिंक वो बोलते हैं ना कि यार मेरा प्रेफरेंस व्यू ये है, प्रेफरेंस व्यू वो है. इधर इट डजंट मैटर ओनली बिकॉज इट्स ग्रीन ऑन बोथ साइड्स. इट्स अमेजिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट? ये इनफैक्ट कम्युनिटी पार्क जो आप देख रहे हैं, ये हमने ही बनाया है. And it's like 350 plus trees out there. Some of these trees are hundreds of years old. So the view is to really enjoy, on both sides. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि there are 4 apartments on a floor. 2 units, unit 1 and 2 are 1268 square feet usable area, and the other 2 units are 1330. But I want to talk to you a little more in detail about ये unit है क्या. Since, as I was saying starting में, कि these have been designed inside out. So let's talk about why these are so amazing. ये है, मैं एक फ्लैट का आपको सिर्फ डिटेल समझाना चाहता हूँ, राइट? So I'll get into the details quickly. ये जो लिविंग रूम है, एल शेप लिविंग डाइनिंग है. The beauty about this is it's almost like saying कि ये 2 rooms combine साथ में है. वरना क्या होता है, लिविंग रूम एक लंबा सा रूम होता है, आप एंटर करते हो तो डाइनिंग टेबल पहले आता है, उसके बाजू में सिटिंग एरिया होता है, या सिटिंग एरिया होता है और डाइनिंग टेबल होता है. You always have to pass one area to go to the other. Here there are 2 separate areas completely. 405 square feet, you find such a huge living room in Thane, and tell me ये इतने एरिया में तो फ्लैट आ जाते हैं पूरे, इतने से 405 square feet में. Master bedroom comes with a walk-in wardrobe. You tell me how many projects have that in Thane? Very few, handful. I can't remember anyone right now on my fingertips. 315 square feet is a master bedroom, and it comes with an extra deck also. Even the living room comes with a deck. We all want you to enjoy the view of courtyard. We want you to sit in the balcony and have a tea, have coffee, enjoy the rain, enjoy the view. That's the idea. You can even look at all your kids playing down in the garden and enjoy that too. The kitchen also is a huge 100 square feet kitchen with a utility deck out here. Not just that, सबसे important चीज, आजकल सब वास्तु एक्सपर्ट्स हो गए हैं. No one knows really benefit होता है कि नहीं, पर सबको वास्तु compliant अपार्टमेंट चाहिए, तो हमने उस हिसाब से वास्तु compliant अपार्टमेंट्स बनाए हैं, which are all east-west orientation.
So there is no one who's going to come and say कि यार ये entry correct नहीं है, ये exit correct नहीं है. All east west. The advantage of east and west is what? If you know थोड़ा science sunrise होता है east में, correct? And अपने मुंबई में जो मानसून आता है वो है साउथ वेस्ट मानसून. जो winds आते हैं मुंबई में वो है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट winds. So simply put, sunlight, natural cross ventilation is all ultimately there in this entire apartment. ये 3 sides open apartment है, walk-in wardrobes है. By the way, let me tell you, finish के हिसाब से we're giving you Italian marble flooring. Bordacino is what has been used in the entire house. There is wooden flooring in the master bedroom. The bathrooms come with all international branded bathroom fittings. It's the best apartment that you can get in terms of the specifications. Even the windows are all imported from Germany. This is a brand called Stucco that we're using. This is all that we're providing, but I want you to come and see this apartment. I don't want to talk to you more about it. Now, coming to the progress, how we have progressed. This has been taken 2 days ago. Out of 29 floors, you can see 21 floors have already been casted. 21 floors cast ho chuke hai already. The work at site is going at an amazing pace. 12 दिन के एवरेज पे हम लोग एक स्लैब कास्ट कर रहे हैं. मैथ आप कर लो बाकी कितने बचे हैं दिन, पर देख लो कि 12 दिन के हिसाब से. एंड दिस इज डिस्पाइट द लॉकडाउन. ऑल राइट, आई मीन आप जानते हो लेबर शॉर्टेज है, वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, every possible issue that has been there, material has not been available, but we have achieved the ultimate. हमने प्रॉमिस किया है, हम डिलीवर कर रहे हैं. रेरा डेट तो आगे का है, हम लोग बहुत ही पहले ही तैयार हो जाएंगे हम लोग. This is what we are doing, 12 days में we are closing our slabs. And moving forward, मैं आपको बता दूं कि payments as of today are close to 65% due, 66% actually. So that works out to, अगर आप 3 crores का all in inclusive apartment लेते हो, 2 crore तो already due है आज, 2 crores is due already, and 1 crore needs to be paid in the next 6 months before OC possession happens around that time. So it's not so easy, right? मतलब कि अगर आप जानते हो कि यहाँ पे जो customers लेते हैं, they are all कहाँ से आते हैं? वो सब विसिनिटी से आते हैं, आजू बाजू से आ रहे हैं, जो बेसिकली अपग्रेड कर रहे हैं. दे आर सेलिंग देयर 1-2 BHK, दे आर बाइंग अ 3 BHK, और दे आर सेलिंग ऑन 3 BHK इन एन ओल्ड कॉम्प्लेक्स, एंड न्यू कॉम्प्लेक्स न्यू घर ले रहे हैं 3 BHK का वैसे. सो दीज आर ऑल अ लॉट ऑफ गाइज. आप जानते हो अच्छी तरह से कि लॉट ऑफ दीज गाइज आर ऑल रीसेल गाइज जो अपना प्रॉपर्टी बेच के ले रहे हैं. एंड अगर इफ आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ समवन लाइक दैट, it's not so easy because उनको immediately मतलब फ्लैट के 10-15% पे करना है, उसके बाद 50-55% पे करना है immediately. This is all due now, like immediately. उसके बाद if they're selling their house, they'll have to sell it quickly. They'll have to जो भी प्राइस मिले अपार्टमेंट के लिए लेना पड़ेगा, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते. फिर उनको रेंट पे रहना पड़ेगा. 6 महीने का रेंट मिल गया तो अच्छी बात है, वरना उनको 11 महीने का रेंट पे करना पड़ेगा. देन उनको अपना होम लोन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. बाकी पेमेंट्स के लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा, उनको पोजेशन लेना पड़ेगा. देन दे विल हैव टू मूव इन, देन दे विल हैव टू क्लोज देयर होम लोन. द प्रोसेस इज नॉट इजी एट ऑल, राइट? आई मीन अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कोई लेता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, and these guys are, most of these guys are all upgrade guys. So I would in fact that is the whole thought process. हमने वही सोचा कि how do we make this guy who's looking to upgrade to a better lifestyle, how do we make his life easier? And that's where we that's where we are going to come to exactly what we're going to talk about right now. So Shivangi, I hope you're all set, and I think I'm going to hand this over to you. It's hi Shivangi, you're there? I think she's having some connection issues. Okay, so I'm just going to continue, and she's just going to join us shortly. All right. So
Yeah, I'm going to launch the best deal of 2021. Just a moment. Yes. Okay, cool. So Shivangi is going to be joining us shortly, is what I just heard right now. But I'm going to start. Okay. Sorry, Shivangi. I know you were damn excited about this, पर मैं ये start करने वाला हूँ. Okay, let's go for it. Launching the new scheme at Courtyard. जैसे मैंने आपको बताया 65% ड्यू है, बट आज के टाइम पे आपको सिर्फ हमको देना है 20% टुडे, 80% एट पोजेशन. व्हाट डज दिस सिंपली मीन? आप ओनली 20%, विच रफली वर्क्स आउट टू अबाउट 65 lakhs पे कीजिए. वो तो कस्टमर के पास एफडी में या म्यूचुअल फंड में पड़ा होगा. ही जस्ट हैज टू सेल दैट. ही गेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू सेल हिज अपार्टमेंट. एंड लेट मी टेल यू, no stress of home loan because this is a developer subvention. There are no hidden charges, absolutely. And आप जानते हैं कि the tower is nearing possession. So I hope you all taken screenshot of this. अगर आपने नहीं लिया है screenshot जल्दी लीजिए, या वरना मैं आपको ये पहुंचा दूंगा ये slide वैसे भी. Okay. So I'm going to get a little more into detail about this. This is absolutely, ये आज तक हमने कोर्टयार्ड में कभी नहीं किया. ये आज तक इनफैक्ट थाने के सब बिल्डर ने नहीं किया है. This is a genuine offer. इसमें कुछ भी हिडन चार्जेस, हिडन क्लॉजेस, हिडन इश्यूज कुछ नहीं है. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. यस, it's absolutely a peace of mind offer, and this is ultimately the best offer for your customer जो पास में रहते हैं और जो अपग्रेड करना चाहते हैं their lifestyle. This is keeping that customer in mind. So I'm going to get into the details of this offer. Shivangi, hi, you're there? Okay, so this is a genuine developer subvention. Yeah, that means that it's absolutely no involvement of third parties at all. Yeah, Your voice is crackling, Shivangi. I can. What we've done here is that there is absolutely no price hike. जो price हम sell कर रहे थे 3.02, we are going to keep the same price. There are no hidden charges. There are no bank guarantees required. As you rightly know, stamp duty is 4% only till the 31st of March. So ensure कि आपका client उसके पहले आके close करे. Anyways, this offer is ending on the 31st of March. So this has to be done before. This is also beneficial जो लोग already अपना घर बेच चुके हैं. So capital gains का चक्कर भी अगर है, someone has already sold their apartment, they need to buy it before 31st March, right? So that they are not taxed for it. So this is a great offer for him also. Now, as मैंने आपको बताया था पहले कि it's about 54% of all units in Courtyard have been sold out already in Roseanne, have already been sold out. So this is your last opportunity to choose कि आपको कौन से फ्लोर पे चाहिए, कौन सा व्यू चाहिए, because 31st मार्च के बाद आई थिंक जो लेफ्ट ओवर अपार्टमेंट्स बचेंगे आपको वही लेने पड़ेंगे. Yes, as I said, no home loan stress. A lot of your customers are business वाले, right? बिजनेस वालों को लोन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, होम लोन आसानी से नहीं मिलता है. सो उनके लिए भी ये काफी आइडियल सिनारियो है. लोन का चक्कर नहीं है, एलिजिबिलिटी का इशू नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली मेड फॉर जो अपग्रेड करना चाहते हैं, जो अपने पुराने वसंत विहार में जो अपने पुराने फ्लैट्स या मेडोज में अपने पुराने फ्लैट्स बेच के दे वांट टू get into a new apartment, a new development. This is ideal for them. Also आप जानते हो कि by the time when we'll be reaching closer to the OC, आप जानते हैं कि prices हमेशा hike हो जाते हैं. So this is probably a last opportunity कि आप ये price पे ले लो, because इसके बाद customer को तो प्राइस तो ज्यादा देना ही पड़ेगा. अवेलेबिलिटी भी जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा. वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. हाँ, तो ये वैसा टाइप का सीन है अभी फिलहाल. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. पोजेशन रिस्क तो है ही नहीं, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स रेरा आने के बाद भी बोलते हैं यार इतना हमने पेमेंट कर दिया, अगर प्रोजेक्ट अटक गया तो आप उनको बोलो कि बॉस डेवलपर ने 66% ड्यू होने के बावजूद सिर्फ 20% दिया है. कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है? इमेजिन डेवलपर का क्या कॉन्फिडेंस लेवल है
कि वो सिर्फ 20% ले रहा है, बोल रहा है बाकी आप बाद में दे देना पोजेशन के टाइम पे। सो इतना कॉन्फिडेंस किसके पास है? आई डोंट थिंक थाने में कोई भी डेवलपर, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, थाने में तो सबसे बेस्ट डेवलपर्स है, सबसे बड़े बड़े नाम तो थाने में आते हैं, राइट? किसने भी ऑफर नहीं दिया है आज तक, किसी ने भी नहीं। You can check it out for yourself. So we are the first guys who are so confident in giving this offer out here. This is an absolutely stress-free deal for a 3 BHK guy. It's a dream home to buy. अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कस्टमर्स होंगे ना, वो बोलेंगे अरे मैं 6 महीने रुक जाता हूँ, अभी नहीं लेता हूँ ना, ओसी पे लेता हूँ। Why should I take the stress of buying under construction? This is what you're going to talk to him about, all right? कि अभी क्यों ले और बाद में क्यों नहीं ले। अगर वो आज लेता है टिल द 31st ऑफ मार्च, जीएसटी वो देगा 5%, स्टैम्प ड्यूटी देगा वो 4%, 9% इज द टोटल टैक्सेशन इन द इंटायर ट्रांजैक्शन, इन द इंटायर डील। अगर वो 1st अप्रैल लेता है, you know that the taxes are going to go up. GST 5% रहेगा because OC आया नहीं है अभी तक. Stamp duty is going to go up to 7%. It's going to go back to 7. You can imagine, do the math yourself. 7% of 3 crores, it's a huge amount. It's going to be a total of 12% total. And अगर वो लेता है OC, which is we are expecting around around August. So GST 0 हो जाता है after OC. Stamp duty 7% रहेगा. बट आप जानते हो कि रेडी फ्लैट तो प्रीमियम पे ही बिकता है, राइट? सब डेवलपर्स करते हैं ऑटोमेटिकली, यू नो दीज आर द लास्ट फ्यू फ्लैट्स, सो यू वांट टू सेल इट एट अ प्रीमियम। अगर मैं 10% प्रीमियम भी ले लूं, ओनली 10%, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट 17%। you can do the math yourself. You guys are the experts. You can understand कि the deal is there today. आप 9% पे कीजिए, मतलब the you know the total amount, the 9% taxes that you will pay now will eventually, the prices will increase substantially. Who knows, when we are talking in August, if there are any flats remaining, we would be selling at maybe 3.5 crores. So it's time is now. Shivangi, hi, are you there? Okay, so what also happens is that hi, your voice is cracking. I think you should continue. It's really bad reception here. So. All right, no worries. Okay, so as I was saying, क्या हो जाता है जब भी बंदा OC पे लेता है, he has to sell his apartment immediately. He has to make 100% payment, and trust me, it is not easy to sell an apartment and buy an apartment at the exact same time. काफी close हो जाता है. He needs to find a buyer quickly. He needs to sell. He needs to register. He needs to move. It's not easy at all. It's a lot of running around, and कुछ भी delays हो गए तो he's absolutely left out on the road. It is not an easy thing to do of buying an apartment at the time of OC. Somewhere compromise तो करना ही पड़ता है. So it is the time to buy it now, not later. It's now. Yes. So most of you guys out here, जिनके मैं नाम देख रहा हूँ, most of you आप already इधर आ चुके हो हमारे साइट पे. आपने ये अपार्टमेंट्स देखे हैं, बट आप नहीं आए हो तो प्लीज कम चेक आउट our sample apartments. Sample apartments में we provided all the amenities which I spoke about: Italian marble flooring, windows, bathroom fittings, everything. So you can come and you can check out everything for yourself. You can see the view. You'll get the entire picture, the entire idea कि हम क्या डेवलपमेंट दे रहे हैं. एंड रोजैन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये ब्रोशर दिखा के आप नहीं बेच सकते हो, ये वीडियो दिखा के आप नहीं बेच सकते हो. आपको क्लाइंट को लाना ही पड़ेगा साइट पे, और जब वो बंदा आएगा ना साइट पे, और वो जब वो अपार्टमेंट में वॉक इन करेगा, आई थिंक ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट लेट हिम वॉक अराउंड. डील हो जाएगा. आई डोंट थिंक इवन द सेल्स गाइज नीड टू टॉक. वो कस्टमर खुद ही देख लेगा, वो खुद ही समझ लेगा, और वो खुद ही आपको बोलेगा अच्छा यार, लेट्स डू द बेस्ट डील, लेट्स क्लोज दिस अपार्टमेंट क्विकली. ट्रस्ट मी, ये वैसा टाइप का अपार्टमेंट है वो जो आपको पॉजिटिव फीलिंग जो आती है ये अपार्टमेंट में, एंड स्पेशली फॉर मैटर ऑफ फैक्ट बिकॉज ये ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन है ना, तो जो नेचुरल सनलाइट आता है और आप विंडो ओपन करते हो तो जो हवा आती है अंदर, आई मीन एसी वेसी भी छोड़ दो यार, वो भी जरूरत नहीं पड़ती है. इट्स अमेजिंग. जस्ट इट सेल्फ फॉर इट सेल्फ. 54% जस्ट टॉक्स अबाउट दैट ओनली. वो खुद ही बिक गया. हमने खास कोशिश तो कुछ की नहीं है, आपने मेहनत की फॉलो अप करने की क्लाइंट के साथ कि कभी आ रहे हो बुकिंग के लिए. दैट्स व्हाई आपने 71% ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बेचे हैं. सो कमिंग नाउ टू द प्राइसिंग. प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको बताया था एग्जैक्टली सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है. इट्स द सेम प्राइसिंग. वी स्टार्टेड 3.02 ऑल इंक्लूसिव.
that is for the 1268 वाला जो हमारा unit है, ये उसके लिए है. And obviously the 1330 starts at a slightly higher price, bigger size. So obviously it starts at 3.22. But as all my sales colleagues, all my friends at site will say, this is absolutely strictly no negotiation. आप जब क्लाइंट को लाए होगे, आपने भी रियलाइज किया होगा कि कोर्टयार्ड में रोजान में तो नेगोशिएशन का स्कोप है ही नहीं. प्लीज डू नॉट ब्रिंग कस्टमर्स विद लोअर बजट इन द होप कि यार नेगोशिएट हो जाएगा, बिकॉज मतलब we don't want to disappoint you, we don't want to disappoint the customer, we want all of y'all and all of us to be happy. So please do not negotiate with us on the pricing. And as we rightly clearly said out here, it's absolutely no home loan required in this offer, no hidden charges, and the tower is very close to possession. We will be giving possession in the second half of this year, and we are really looking forward to it. Coming to the most exciting part, a lot of y'all were just waiting for this, right? I mean, business यार, मतलब इसमें मुझे क्या मिलने वाला है? So let's get into that. मुझे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3% brokerage flat. And we don't want you to sell just one apartment. We want you to sell 3 apartments, all right? We want you to do 3 apartments and 3% brokerage आप लेके जाइए. And this is also offer is valid only till 31st March. I think calculation के हिसाब से roughly कुछ 60-61 days बचते हैं. So let's get into action immediately, because there is a lot for you to get into it. 3% of a Roseanne apartment is huge money, man. This is, I think you should put all your resources इधर. आप सब resources को इधर लगा के ये बेचिए. As always, हमने आपको काफी हैंड होल्डिंग किया है, काफी सपोर्ट दिया है, एंड वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी ऑलवेज वेलकम यू फॉर दिस, कि आप आइए, हम लोग आपको कॉलिंग में मदद करेंगे, हम लोग आपको सब वीडियोस दे देंगे हाथ में, एसएमएस ईमेल ड्राफ्ट करके दे देंगे, उसका सपोर्ट दे देंगे, हम आपको करवा के देंगे. एंड यू नो दैट द फास्टेस्ट पे आउट हैपेंस, मतलब आई डोंट नीड टू से इट, आपने वीडियो तो देखा ही, राइट? व्हाट पीपल से 7 days 15 days में पे आउट हो जाता है. कौन से प्रोजेक्ट में होता है थाने में? आई डोंट थिंक और कोई देता है. I don't want to take names. That's wrong. That's wrong to take names. So आप जानते हैं कि we are one of the fastest guys for payouts in Thane. Yeah, so we are always there for you. And हमारे 3 महारथी, अंशु तिवारी, नरेश and Sumit, these 3 guys are always available for you all. आप उनके numbers already आपके पास होंगे, but you all can always reach out to them. Most of you all already know them. In case आप new हो यहाँ पे, you can reach out to any one of them and they will gladly invite you to site and bring you into the Courtyard family. And once you're in the Courtyard family, you will have a lot of privileges. You will get the best sales support and you will get the best closing support and you will get the best and the fastest payout, is what I would assure you. I mean, I have taken all the possible time out here. Hi Shivangi, I think you're finally back. I know, I'm extremely sorry. Yes, there was a very bad internet issue, so I really apologize, for not being a part of, the exciting scheme announcement. But I think I think the internet also can't handle the excitement. It's a bit of how we are going to sit across the table and close the deal. So, bas abhi, so I think now all what I'm saying is, I think a limited period ka time hai, 2.5 mahine mein 23 deals as a contribution from channel partners. I think we shouldn't wait for this anymore. Sold out का board हमको बहुत जल्दी लगाना है रोजान के बाहर भी, जैसे हमने Florence, and simultaneously I think in a week's time we'll put a sold out board even outside Onyx, and Ornella and Ivy as well. So that is how we are looking at. So all the very best. I think, thank you so much. You can reach out to our sales team. We have a sourcing team completely at your service. So yeah, I think that's about it. And any kind of support, you can reach out to the team as well. Thank you so much, Rishi, for your time. Thank you so much, guys. It's been a lovely 1 hour with you guys. ऐसे time पता ही नहीं चला कैसे fly हुआ. But trust me, I want to meet you at site. You can reach out to us. You can reach out to me. And next time I'll see you at site in person. Thank you so much. Have a great day, guys. See you at site. Thank you.